The mandolin. I didn't choose it. The mandolin chose me. Now, बहुत philosophical line लग रहा है ना आपको? But that's the truth, dear friends. You know, many years ago, in 1999, how old was I? छोड़ दो ना अभी वो सब यार. Back in 1999, I was in a boarding school. Okay, I was a scholarship student, and my scholarship included extracurricular activities का coaching. मतलब music सिखाते थे. और मुझे vocals नहीं सीखना था यार. I wanted to learn an instrument. I wanted to be very cool holding a guitar or sitting on the drums or playing the keys or something like that. But my scholarship did not allow the cost of procuring the instrument. तो मैं रो रहा था यार because I definitely knew that I couldn't write to my mother and ask her. I know she wouldn't be able to afford it. So when I was crying, the warden passed by and he assumed, like all newcomers to a boarding school, I'm homesick. And then I told him that no, it's nothing about that. It's just I want to learn a musical instrument, but I can't afford anything. So he said, will you learn the mandolin? I asked him, what is that? He said, wo chodo. One senior, somebody who passed out of the school last year, has left behind a mandolin. Why don't you take it and show it to your teacher? And if it's in working condition, you can learn it. You don't need to buy it. So that night, dear friends, you know, it was almost like falling in love with somebody whom you've never met, but you know that that is your destiny. तो मैं पूरे रात में imagine कर रहा था कि mandolin कैसे हो सकता है? Is it a reed instrument? Is it a wind instrument? Is it a string instrument? Is it percussion? कुछ नहीं पता था till the next day when I finally went and picked up the mandolin left behind by my senior, and तब से it's been the only constant in my life, you can say, dear friends, from 1999. You know, stories always fascinated me. You know, initially, it was not because of the truth. It was because of lies. You know, I enjoyed lying so much. बचपन में अगर कोई मुझसे कुछ पूछता था कि यार आज तेरे साथ क्या हुआ, मतलब एक्चुअली कुछ होता नहीं. रियल लाइफ was so boring. कुछ नहीं, स्कूल गया वापस आता, मैं कुछ बना लेता था. You know, रास्ते में मैंने वो देखा, वो गाड़ी ऐसे गिरा, ऐसे कोई भी फिल्म का सीन जोड़ के मैं मसाला मार के लोगों को बताता था. तो मुझे झूठ अच्छा लगता था क्योंकि उसमें imaginations बहुत एक्सरसाइज करने को चांस मिला. So I never lost a chance to tell a story. But gradually, once you start growing up and you start reading more, you start seeing more, you realize that research and truth make a story much more than just entertaining. It actually creates an impact and with serious ramifications, positive ramifications for society. So even when I was a part of Neeraj Kabir Cafe, stage में मैं कभी stories कहने का मौका छोड़ता नहीं था कि कबीर के जो बाणी को कहानियों के थ्रू और म्यूजिक के थ्रू कैसे लेके जाए. So the merging of worlds, the of solid research when it meets imagination, that's what drew storytelling to me. And during the very unfortunate phase of lockdown, मैंने सोचा कि चलो डिजिटली कुछ करते हैं, लेकिन ये शक्ल तो इस तरह अभी तो लॉय सर अच्छे से शूट कर रहे हैं, पर घर पे तो नहीं आता, तो मैंने शक्ल वकल बंद करा दी, वीडियो बंद कर दिया और एक इंस्टाग्राम में एक रेडियो फॉर्मेट स्टार्ट कर लिया, मिडनाइट म्यूजिक्स एंड द मैंडोलिन. दैट इज वेयर माय मैंडोलिन काइंड ऑफ मैरिड द बार्ड इन मी. तो म्यूजिक और कहानियां साथ आने लगे, जहाँ पे मैंने वीडियो बंद कर दिया था और लगातार 455 नाइट्स रात को 12 बजे मैं मैंडोलिन बजाता था, कहानियां बोलता था, म्यूजिक बजाता था और कहानियां बोलता था. Welcome to Midnight Musings in the Mandolin. No, don't worry, nothing has gone wrong with the video. Camera में battery card और सब ठीक है. The podcast format in a highly visual medium, that was the experiment that I did with Midnight Musings and the Mandolin. तो कुछ इस तरह research, the inherent need for imagination and the music, they came together, and it's a kind of a new thing in me that I discovered, and I'm enjoying the process. I'm really enjoying making music and telling stories and meeting people and performing it. It's quite fun. Indie is the core of every individual, where we exist without any agenda, where we create for the sake of creating because we enjoy the process. Once creating gets defined by an agenda saying isko itna numbers generate karna hai, iski wajah se ये होनी है, then automatically it becomes a part of a larger business plan. So in any form, it can be an art, it can be music, dance, passion, or even technical things like coding and other stuff. When you do it just because you believe in something and you want to do it, that is indie. And keeping that spirit alive is Indemus as well, where you create because of the love of creating.
and you enjoy the process. So being process driven and not agenda or result driven is is what I feel. I do not like to use the word support and stuff like that. I'm saying that genuinely you will enjoy better quality music when it comes from independent space rather than the ones composed or made for some other projects. And when you enjoy something, say it out to the world. You know, WhatsApp ग्रुप्स में, स्कूल का ग्रुप में, कॉलेज का ग्रुप में, गुड मॉर्निंग गुलाब के साथ साथ एक गाना भी भेजा करो कि आज मैंने ये आर्टिस्ट का गाना सुना, बहुत अच्छा लगता है. यूट्यूब के नीचे एक कमेंट लिख दो, यू नो, एंड फेसबुक में थोड़ा सा शेयर कर दो यार. कुछ पैसा नहीं लगता है आपको, लेकिन हमें आप तक पहुंचने के लिए इंडिया आर्टिस्ट को बहुत एफर्ट और पैसा लगता है. अगर आप कुछ अच्छा लगता है आपको, तो प्लीज लुक, keep an eye for independent creators around you, and when you connect with something, do not think of it as support. It is adding value to our life. यार सारे आर्टिस्ट को एक सीरियस एडवाइस दे रहा हूँ, आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी हो, बिल्कुल ठीक है. Everything is absolutely fine if you have embarked on the part of art and in your own spirit of creation. You're doing great, fantastic. तो दोस्तों, in a village, ठीक है, कोई भी विलेज आप समझ लो, just at the outskirts of the village there was a snake, 12-foot long king cobra. Imagine किया. Now that snake is a very vicious snake, dear friends. क्योंकि बिना कोई रीजन के किसी को भी काट लेता था. It was killing for fun. It just found a certain thrill in attacking people and animals. So obviously nobody ventured near the snake's territory. पर एक बार कुछ आप में से कुछ लोग होते जो बहुत अति स्मार्ट होते, वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते और बॉल वहाँ जाता है, तो स्नेक क्या करते हैं कि आउट क्या होता है दिखाता हूँ करके, जो फील्डर जाता है बाउंड्री में बॉल लेने, उसको काट ही लेता है. तो उस पूरा एरिया बैन कर लेते, कोई वहां नहीं जाता. एक दिन एक संत महान was just passing by and the snake thought, चलो इसको भी काट लेता हूँ. But संत being a sant with his mystic spiritual power, the snake was hypnotized for a change. The sant said, क्यों कर रहे भाई ऐसा? Why are you doing this? Why are you unnecessarily killing people, harming people? You know you are powerful and this is not how you should behave. प्रवचन देना शुरू करते हैं, एंड द स्नेक टेक्स इन एवरीथिंग. एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है स्नेक में, एंड बाय द टाइम द सेंट इज डन विद हिज सर्मन, द स्नेक हैज कंप्लीटली एक्सेप्टेड नॉन वायलेंस, पीस, वाइबिंग, कूल, ऑल हैशटैग्स दैट ऑल ऑफ यू यूज, सब कुछ स्नेक ने अंदर डाल दिया और शांत हो गए, एकदम ज़ेन बन गया. अभी वैसे भी आपके जैसे कुछ अति स्मार्ट लोग वापस क्रिकेट खेलने आए, क्योंकि काफी टाइम से वो स्नेक दिखा नहीं, लेकिन एक ने सिक्स मारा एकदम स्ट्रेट इनटू द स्नेक्स हुड. अब जाके देखा कि जो सांप जहां सो रहा था उसके एकदम बगल में वो बॉल जाके गिरा है. अब बोल रहा है कि यार मैं नहीं लेके जाऊंगा वहां पे, सांप है. अब बैट्समैन बोलता है कि अरे यार मैंने मारा तो क्या, तूने ऐसा फुल टॉस डाला, अभी बॉल तो चाहिए वरना मम्मी मारेगी, उनको दूसरी बॉल नहीं मिलेगी, जाओ अभी लेके जाओ. तो दोनों लड़ रहे. फिर बैट्समैन बोलता है ठीक है मैं ही जाता हूँ. धीरे 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 जाता है कि स्नेक इज नॉट डूइंग एनीथिंग. यूजुअली अब तक तो सांप आ जाता था और 3-4 लोगों को काट ही लेता था. तो हल्का सा एक पत्थर मारता है, स्नेक इज स्टिल यू नो zen मोड, वाइबिंग, पीस, ऑल चिल ब्रो, आराम से बैठा है. एक स्टेप नीचे आता है, एक स्टेप उसके पास आता है, एक स्टेप जाके फाइनली बॉल रिट्रीव कर लेते. लेकिन रिट्रीव करके चुपचाप घर जाना चाहिए ना, नहीं गए. है सांप कुछ नहीं कर रहा है, मर गया है क्या, जरा देखते. तो एक थोड़ा सा बड़ा पत्थर आता है, सांप अभी भी चिल मोड, zen मोड, ऑल इज वेल उस जोन में. धीरे धीरे सारे इधर के 11 प्लेयर्स, उधर के 11 प्लेयर्स, आसपास जो घूम रहे सब लोग आ रहे हैं, एक पत्थर मारने लगे, फिर लकड़ियां लेके मारने लगे. एंड बिफोर द स्नेक कुड रियलाइज इट वाज बीइंग स्मैश्ड ऑल ओवर एंड इट वाज टू लेट फॉर इट टू डिफेंड इटसेल्फ. तो वहां से वो भाग रहा है, स्किन में पूरा लैसरेशंस है, खून निकल रहा है, इंजर होके कैसे भी मैनेजेस टू स्लिदर अवे होल्डिंग ऑन टू हाफ अ लाइफ. एंड वेयर डज इट एंड अप? राइट नेक्स्ट टू द सेज. वो मिस्टिक जिन्होंने इतना बड़ा एडवाइस दिए थे उनके पास ही गया. अरे सर आप सच में फ्रॉड हो, यू नीड टू बी अरेस्टेड. आप जो भी बक रहे थे, आपने जो भी बोला मैं फॉलो किया, देखो मेरा हालत ऐसा. द सेंट लुक्स एट द सर्पेंट एंड सेज,
बेटा मैंने तुम्हें क्या बताया? You told me not to bite. Yes, I did. But did I tell you not to hiss? You should understand this, dear friend, that giving up your ego doesn't mean giving up your self-respect. इन दोनों का difference समझो. Humility का मतलब ये नहीं कि आपका self-respect को बेटे. So remember to hiss, but to not bite. अब उस स्नेक को असली ज्ञान आया. अच्छा लगा दोस्तों ऐसे कहानी? ऐसे बहुत सारी कहानियां मेरे पास. जुड़े रहिए, कहानियां सुनते रहेंगे, म्यूजिक बजाते रहेंगे और चलते रहेंगे.